Assalamu alaikum. So we are starting the lecture series of lecture again. After 3 months, there is a long break. So आज start करते हैं हम starting with past paper question जो कि 2021 में आए हैं. पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं आज कुछ क्वेश्चन पेपर 1 के एंड देन पेपर 2 डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, जो आज का क्वेश्चन है, आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज question of coordinate geometry and some properties of circle are also includes in it. Okay, so in this question examiner is asking you to find the equation of tangent at p. The equation of tangent at p, it means that this is the line, this is the tangent line which is tangent at p. ये वो लाइन है, ये वो टेंजेंट लाइन है जो टी पे टेंजेंट बना रही है. P is the tangent point and line is called the tangent line. They are asking to form the equation of tangent line. For forming the equation, we need the 2 points for finding out the gradient and the y-intercept. This is called the equation of a straight line, the general form of equation of a straight line. For finding out the equation, we must need the gradient. अब gradient के लिए 2 points की जरूरत होती है because the formula for finding out the gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. We are having only 1 point on the line which is P. But in the question they have mentioned that P is at circumference and C is the center of the circle. P is at circumference and C is the center of the circle. So the distance from C to P, is called radius of the circle. Is called radius of the circle because C is the center of the circle and P is at circumference. And the definition of radius is distance from the center to the boundary of a circle is called radius. Acha ji. Now we have discussed in circle properties that जब रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे गिरता है इट फॉर्म अ राइट एंगल विद टेंजेंट लाइन. इट फॉर्म अ राइट एंगल विद टेंजेंट लाइन. तो ये दो लाइंस जो टेंजेंट लाइन है और जो रेडियस है दे बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर. व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -1. लेट्स सपोज द लाइन CP having gradient m1 and the tangent line having gradient m2. Because the lines are perpendicular, then product of their gradient must be equals to -1. Okay, how could we know that the lines are perpendicular? By using the property of circle. Circle property क्या कहती है कि radius जब tangent point पे गिरता है तो it form a right angle with tangent line जो मैं अभी highlight कर रहा हूँ. Okay, तो मैं डायरेक्ट टेंजेंट लाइन का तो ग्रेडियंट नहीं फाइंड आउट कर सकता बट I can easily find it out the gradient of radius. क्योंकि रेडियस के मुझे 2 पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट C और एक पॉइंट P. तो लाइन CP का मैं ग्रेडियंट इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं जो मैंने M1 से डिनोट किया है. द 2 पॉइंट्स आर 0, 1 and 3, 5. And the formula for finding out the gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. ठीक है. The first coordinate is said to be x1 and y1 and the second one is said to be x2 and y2. Put the value in the formula. Y2 will replace by 5, y1 will replace by 1, x2 will replace by 3 and x1 will replace by 0. So its gradient will be 5 minus 1, 4 upon 3. 3 minus 0, 3. So M1 is equals to 4 over 3. Okay, but we need the gradient of tangent line. For finding out the gradient of tangent line which is representing by M2 over here, जो मैंने बताया था कि जब दो lines perpendicular होती है then product of their gradient is equals to -1. Okay, तो हमें M1 तो मिल गया है. M1 multiply M2 is equal to -1 because the lines are perpendicular to each other. So gradient of the line CP is 4 over 3. अब मुझे टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट मालूम करना है जो कि M2 से रिप्रेजेंट हो रहा है
is equal to -1, m2 is equal to -1, 3 is dividing over here, it will be multiply, and 4 is multiplying with m2, will be divide after changing its position. So the gradient of tangent line become -3 upon 4. Okay, so you got the gradient of tangent line is -3 upon 4. Okay, for making the equation, the general form is y is equal to mx plus c. Okay, this is the general form of straight line. Okay, you got the value of m. The value of m is 3 upon -3 upon 4. Here x and y are there and c is there. Now we need to find the value of c. C is called the y intercept. हम हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. For finding out the value of c, you must replace x and y by the points which lies on the line. ठीक है, c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने ये x और y को सब्स्टिट्यूट करना है. अब x और y की वैल्यू कहां से लोगे आप? x and y are the points which lies on the line. अब ये जो p पॉइंट है ये टेंजेंट लाइन पे लाया करता है, तो इस पे जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो x कहलाएगा और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो y कहलाएगा. ओके, व्हेनेवर द इक्वेशन इज देयर, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ कर्व, तो लाइन या कर्व पे मौजूद जो पॉइंट होता है, मींस अगर लाइन पे कोई पॉइंट है तो इक्वेशन में एक्स वाई हटाकर वो लाइन का पॉइंट रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है, अब हमें सी मालूम करना है, तो एक्स वाई क्या है? एक्स वाई आर द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द लाइन. तो एक्स की जगह आप रिप्लेस करेंगे 3 से और y की जगह आप रिप्लेस करेंगे 5 से प्लस c. सो 5 इज इक्वल टू -9/4 प्लस c. अच्छा, अब एक जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को उधर जाके 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज रॉन्ग. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैन ओनली बी डन इफ देयर इज अ सिंगल फ्रैक्शन. या तो आप यहाँ पे जो दो फ्रैक्शन है, या तो आप इन दोनों को सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 5 -9/4 पूरे फ्रैक्शन को इधर शिफ्ट कर दो, बिकम +9/4 इज इक्वल टू c. अब फ्रैक्शन को ऐड करना तो डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है. डिनोमिनेटर सेम, 5 4 20 प्लस 9 is equal to c. It become 29/4 is equal to c. Okay, so this is the way to find out the y intercept. y intercept पहले m आपने मालूम करना है, ग्रेडियंट आपने मालूम करना है, फिर ग्रेडियंट और एक्स वाई आपने रिप्लेस करना है इक्वेशन के अंदर, y इज इक्वल टू mx प्लस c में, और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो c की वैल्यू है हमारे पास 29/4, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m हमारे पास आया था -3/4 और c हमारे पास आया था 29/4. आप इसको यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में. और दूसरा, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, y इज इक्वल टू -3x प्लस 29/4. 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 29. यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं और 3x को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन. फिर यहाँ पे सर्किल प्रॉपर्टी की भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, तो ये आपको आना चाहिए. ओके, फॉर मोर क्वेश्चन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन समझाऊंगा जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या सर्किल प्रॉपर्टी से लिंक करेगा. तो मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर सारे वो क्वेश्चन जो एक तरह के हैं वो हर टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट में आ जाएंगे. तो प्लीज वीडियोस को देखें और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज.